Morning, my dear children. So we are live, and there's this really big reveal with which we have come live. Good morning. This is Dr. Vani. Hi, Anjali, Krupa, Khushbu. Good morning, everybody. I hope you're all doing fine. Hi, Jasmeet, Aisha, Afu, Vidika, Gunjan. Good morning, good morning, good morning. How are you doing, everybody? First, tell me that. Are you doing good? Yes, audible, visible. Trupti, Drishti, come on, raise your just thumbs up like that. Audible as well as visible, everybody. Perfect. Give me a thumbs up. So I have something really important to discuss. It will take the next 10 or 15 minutes. I have some extremely important things to talk to you. Done. Chalo aa jao. तो पहला first and foremost, after this there is a lot of एक बहुत important चीज़ पे मैंने बात करनी है because I would wish that you will all start giving your exams today. So there is something on my mind which I wish to tell you. But before that happens, I really need to give you a big surprise. So 3 या 4 चीज़ों पे मेन एजेंडा है आज फॉर यू. तो किससे शुरू किया जाए? शुड वी स्टार्ट विद ब्लैकआउट इन द एग्जामिनेशन? शुड वी स्टार्ट विद मॉक टेस्ट पेपर्स? शुड वी स्टार्ट विद व्हाट वी हैव फॉर यू? किस चीज़ से स्टार्ट किया जाए बताइए. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. यस, तो किस चीज़ से शुरू करें बताइए. Good morning. Okay, so we are going to start with let's say, can you all hear me, see me? Talib, Soumya, Anushka. No, बच्चे, it's not buffering. No, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए अपनी तरफ से. मेरी तरफ से तो बिल्कुल ठीक है. Thank you. It's absolutely fine from my side. Just refresh. I'm just waiting for everybody to come before I actually tell you the big reveal. No, Juhi, Geeta. It's absolutely fine from this side. Roy, Akanksha, Harshada, Dinkar. Okay. So now I will first talk about an important thing and uske liye kya kiya jaye. Right? What is the thing which is on our minds? What we noticed, what we got inputs from our kids, and what do we have for you? So the thing is, yesterday, children, a lot of you called us up. A lot of you are in touch with us on Telegram. Like, in fact, everybody of you is in touch with us on Telegram. So some of my students called me up and they said, ma'am, what happens is, sometimes what happens is, exams hum bahut de rahe hain, we are practicing, we are giving a lot of exams, but what happens is, when you're giving an exam, no, sometimes the first few questions are absolutely googly questions. You don't know what it is. So let us say you've opened your question paper and you are writing your exam paper, but the first 2 or 3 questions you just don't know what to say. You are very confused. Immediately you're very confused about the first 3 or 4 questions. Does it happen with you? Has it ever happened with you that the first few questions you are very you're lost. आप सोच रहे हो आपको आता है और व्हाट हैपन्स इज आपने क्वेश्चंस पहले कभी सॉल्व किए हैं, यू हैव सॉल्व देम बिफोर, बट आई डोंट नो बिकॉज आपको होता है कि यार इस बार मेरा 600 प्लस जाना चाहिए या इस बार मुझे अच्छा करना है. यू आर अंडर स्ट्रेस एंड व्हाट हैपन्स इन द एग्जाम इज दैट व्हेन यू आर सिटिंग एंड डूइंग द एग्जाम पेपर यू आर जस्ट ब्लैंक. बहुत मेहनत की है एंड आप कहाँ सोच रहे थे कि योर स्कोर विल बी 650, 620, 630, बट योर स्कोर इज जस्ट लाइक 370, 400, 410, and that is because आप शुरू के कुछ मिनट में you are scared and you are so scared, आप इतना डर गए उस चीज़ से कि यार मतलब एकदम जैसे ना एक one kind of a paralysis. And bio में physics chemistry में हो फिर भी ठीक है, sometimes it happens with bio also, right, that you are just frozen and actually you get sweaty. Physics you are sweating and you are stressed, absolutely high level of stress. Now I really analyzed and I got this feedback from a lot of students, right, that एक और चीज़ हमारे मन में आई, बहुत आई. So this is point number 1. एक और चीज़ हमने बहुत सुनी as the entire team, and वो था, मैम we are scared what will be the level of the paper. So you are worried whether the paper will be difficult, right? So सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूँ, कोरोना वायरस पे क्वेश्चंस नहीं आएंगे बिकॉज कोरोना वायरस इज नॉट देयर इन एनसीईआरटी. कोरोना वायरस एंड उसके बाद यू आर लाइक, मैम विल देयर बी पेपर लेवल? सो यू आर, इट इज़ ऑन योर माइंड. मतलब पिछले 10 दिनों में, 15 दिनों में आई मस्ट हैव आंसर्ड एटलीस्ट 3,000 to 4,000 मैसेजेस. विल द पेपर बी टफ? मैम अभी कैंसिल हो गया है, कब होगा और टफ होगा, कितना टफ होगा, मैम क्या करेंगे, राइट? सो 2 मेन चीज़ें उभर कर सामने आई व्हेन वी वर इंटरैक्टिंग विद यू ऑन द टेलीग्राम ग्रुप. So first thing was that you freeze in the examination sometimes. लोग डरा रहे हैं, you are scared, you freeze in the examination, you're doing the paper. You know the answer, but even when you know the answer, you are not able to mark the correct answer.
right? You have solved the question many times, but you're still getting confused with the options. Your confidence levels are low, and आप correct mark, you know the answer is C, but something will happen in the exam hall and you will mark A and come. And see, the thing is that most of you are going to give exam in the next 1.5 to 2 months. So you have to be sure. I want you to take a no drop oath. I don't want you to come back to the class again and again. And next year you are studying the same thing. I want you to go to a college next year. So these are the things which we focused on. And then we realized, that although you are studying, you know the tricks, you know the tips, you know the small things, but somewhere, and correct me if I'm wrong, say yes or no, like you are saying, somewhere your concepts are a little weak. Is that so? Especially your class 11th concepts. Especially your class 11th concepts are a little weak. Probably that's the reason, the confidence which should come. You know, the confidence that, yaar, this, that is why that little confusion, that is why अगर question हल्का सा twist हो जाता है, you are like, you know, and that is why that fear कि पेपर कितना टफ आएगा. अगर आपके कॉन्सेप्ट्स ठीक हो गए, अगर आपका फाउंडेशन को मैंने स्ट्रॉन्ग कर दिया, देन तो देयर इज नो पॉइंट ओनली, नो, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, राइट? नॉट लिटिल वेरी. सो समवेयर, बिकॉज आपने पिछले 4 और 5.5 6 मंथ से पढ़ना शुरू किया, सो यू फोकस्ड मोर ऑन योर क्लास 12th, यू फोकस्ड ऑन द शॉर्ट ट्रिक्स, एंड दैट्स व्हाट मोस्ट ऑफ द टीचर्स ऑल्सो डू. दे गिव यू अ शॉर्ट ट्रिक, अ शॉर्ट थिंग, छोटा सा दे दिया, ठीक है, ट्रिक. बट बच्चों, क्या इन छोटे छोटे ट्रिक से एक नीट लेवल का एग्जाम क्लियर हो सकता है? करेक्ट. आई नो सो मेनी ऑफ यू स्टडिंग फ्रॉम 2 years ऑल्सो, बट आपको एक तरह से पूरा कंसोलिडेटेड अगर 11th का कॉन्सेप्ट बिल्ड कर दिया जाए, now you tell me that यार इन छोटी ट्रिक से, remembering a few things, remembering a few mnemonics, remembering small, will you be able to clear the examination like NEET with these little things, or will you require a very detailed explanation? And we have time. We have time. How many of you think that, you know, अगर मेरे को, and how many of you want, मैम 1 घंटा क्लास और ले लो, 1 hour. बट ये जो हम एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज हमारे कॉन्सेप्ट्स वीक हैं, ये जो हम एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज एक चैप्टर पे वी डोंट हैव मास्टरी. सो मैम वो मास्टरी दे दो हमें, अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, एंड वी वांट टू बिकम मास्टर्स. वी डोंट वांट टू बिकम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. वी want to become master of botany of class 11. We want to become master of plant anatomy. We want to become masters of morphology. We want a very detailed, take 1 hour, ma'am. Out of 24 hours, we will give your channel, we will give you 1 hour. बट यार मैम, आप अगले 15 डेज में, एंड 15 डेज का कैप्सूल रन करो मैम, 15 डेज में आप हमें एक चैप्टर का डिटेल डेप्थ एनालिसिस करवा दो. यस, डू यू वांट मी टू डू दैट? बिकॉज ओनली देन विल यू हैव a grasp over the subject. Only then will you have a detailed, you know, control over the subject, and then you will not do wrong. ये सुबह सुबह गाड़ियाँ क्यों चल रही हैं? Oh, he's a milkman. You know, in Punjab they come like this in bullets. Very cool in Punjab. They come. So Punjab has its own idiosyncratic things, no, which are really nice, which you don't find anywhere else in the world. Yes. So do you want me to do this for you, Chahat? Yes. So a little, I'll take 1 hour of your everyday schedule, but all the confusions, A, C, B, D, A, D, B, C, I will do it clear. इससे आपको इतनी सॉल्विंग में कॉन्फिडेंस आएगा that you will automatically solve every day. You will solve a paper every day, and you will write back and tell me that ma'am, so I have made a list of, अब देखो सब कुछ करने की बजाय what Vani ma'am has done is I have made a list of the important topics, high weightage topics, very high weightage topics, very important topics, and I have made a list of them कि यार इसमें से short questions आएंगे, मतलब short questions आएंगे. There is absolutely no two thoughts कि उससे question नहीं आएगा. Yes, and every day I will take 1 hour, and in the next 2 weeks 2021 के लिए भी है, बिकॉज यार 11th के टॉपिक्स जो 2021 ने छोड़ा है, और 2020 को तो करना ही है. कैन आई स्टार्ट द सीरीज फ्रॉम टुमारो? Can I start a concept series from tomorrow? Right? NCERT marking. So extra class. Are you ready for an extra class? Raise your hands, make hearts. Extra class for concept building, because NEET 2020 में tricks वाले questions, tips वाले questions नहीं आएंगे, concept वाले questions आएंगे.
Kajal, and detailed concept classes. And like we say, Vedantu is for you. We understand बच्चों, we understand, we know that आप लोगों ने कितनी जगह, मेरे पास हज़ारों बच्चों के मैसेज आए हैं एक जगह से जहाँ पे उन्होंने पैसे दे दिए थे और वो एक जगह में बहुत कोचिंग होती है बट दे हैड टू लीव. वो बेचारे बसों में बैठ के अपने मम्मी पापा के साथ वापस गए और बोलते मम्मी पापा को हम कैसे बोले कि दोबारा पैसे दो. कहीं कुछ नहीं करना है, आप आइए वेदांतु बायोटॉनिक में. रोज़ के रोज़ मैं आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लासेस कराऊंगी. गिव मी 2 weeks, मंडे टू फ्राइडे. एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है ना पूरे चैप्टर के, वो सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आई विल मेक श्योर दैट यू बाय हार्ट. सो फ्रॉम टुमारो, बिकॉज यू हैव टू डू वेल. अब ये फ्रीज क्यों होते हैं हम एग्जाम में? हम इसलिए फ्रीज होते हैं बिकॉज यार क्वेश्चन समझ ही नहीं आता. वी नो द आंसर बट आवर ब्रेन इज नॉट टेलिंग अस द आंसर बिकॉज हमारी कहीं पे प्रैक्टिस इज लेस. समवेयर वी हैव नॉट बीन एबल टू डू द इन डेप्थ स्टडी ऑफ इट. सो समवेयर आवर कॉन्सेप्ट्स आर वीक, द फाउंडेशन इज वीक. इफ योर फाउंडेशन एंड योर कॉन्सेप्ट्स आर वीक, देन हाउ विल यू बिल्ड a great monument on the weak foundation? So I want to strengthen it. Is bricks आपने लगा दी हैं, पढ़ा है आपने, हमने पढ़ा है. उस bricks के बीच में we need to add the cement now and solidify it. Correct? So those small things which are not tips and trips, which you need to understand so that you are able to attempt a question where your logical analysis, your reasoning, your understanding is questioned. It is not a ratta mar question. Ratta mar questions will be 2 or 3. The rest questions have to have a solid understanding. So are you ready? From tomorrow, will you give me time at 12 o'clock every day in the afternoon, 8 o'clock, 10 o'clock and 12 o'clock in the afternoon, noon 12 o'clock. 2020 2021. Yes, 11th के टॉपिक्स मैं पहले उठाऊंगी, वो भी बॉटनी के टॉपिक्स. तो कल तो हम रेस्पिरेशन की मार्किंग कर रहे हैं, उसके अलावा आई विल पिक अप प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट एनाटॉमी, सेंस ऑर्गन्स. ऐसे टॉपिक्स उठाऊंगी पहले मैं जो हमारी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे, जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं. आर यू रेडी टू सपोर्ट this initiative of V Biotonic and give your 5000%? So this series, this new series, which is a big reveal, which is the most important thing, is a series. Everything needs to be cleared in depth. Everything needs to be internalized in your memory. Make mind maps, internalize it, read it, understand it. Only then we will be able to overcome an examination like NEET 2020. So starting tomorrow, and what do we have at 10 o'clock? What do we have at 10 o'clock now? We have a JIPMER paper. So कभी हम NEET का पेपर करते हैं, रोज हम NEET और एम्स के क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम AFMC का पेपर करते हैं. Today 12 o'clock we have, today 10 o'clock we have a JIPMER paper. Done? Yes. So this was the big reveal. This is what will help you overcome that, you know, नेगेटिव मार्क्स. नेगेटिव मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं? नेगेटिव मार्क्स इसलिए आ रहे हैं बच्चों बिकॉज थोड़े से कॉन्सेप्ट्स वीक है. एग्जाम में हम क्यों फ्रीज हो जाते हैं? एग्जाम में हम इसलिए फ्रीज हो जाते हैं बिकॉज हमारे कॉन्सेप्ट्स वीक हैं. तो उसको सीमेंट करने का टाइम आ गया है. सो स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो वी हैव अ न्यू सीरीज फॉर सीमेंटिंग द वीक ब्रिक्स, कि हम गिरे ना, वो वीक ब्रिक्स को हम एकदम टाइटली डेस्मोसोमल जंक्शंस बना देंगे. एंड टुडे वी आर मीटिंग एट 10 o'clock फॉर जिपमर पेपर. एट 6:30 मैं 2021 वालों को कुछ बुक्स बताना चाहती हूँ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड 2021 वालों को बुक्स के लिए आना है. और शाम को मैं आऊँगी आपके ओपन डाउट सेशंस के लिए. जो भी डाउट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं पढ़ने में, टाइम टेबल बनाने में, क्वेश्चन में, कोई भी डाउट्स आ रहे हैं, लाइव डाउट सेशन. आस्क मी एनीथिंग एट 9 o'clock. Done? Yes, cementing the weak bricks. So we will cement the weak bricks with desmosomal junctions, which will never fail. So I'm going to see you sharp at 10 o'clock in the next 45 minutes. Yes, yes. And tomorrow you have to come. From tomorrow you will have 3 classes 2020 batch. किसने बोला वानी मैम ने 2020 को छोड़ दिया? Yes. So 2020 के लिए कल से 3 classes होंगी, 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे. Correct? चलो मिलते हैं sharp at 10 o'clock. Okay, you have to come. Menti पे quiz है आज. Bye. Bye.